Good evening, everyone. Namaskar, Sat Shri Akal, Saryanu. Dr.GagandeepKaurGulati this side from Weaving Dreams. Friends, you are much welcome to the show. You all know that we keep on organizing various talk shows on our Weaving Dreams platform, wherein we invite dignitaries, celebrities, intellectuals, academicians. With them, we organize talk shows and we try to know much more about their successful life journeys. We also try to know more from them about the different professions, fields, and careers. We also organize certain theme based talk shows wherein we select a particular theme and we have a discussion on those themes. So, today, keeping these things in mind, we have invited three very senior personalities, dignitaries on our show, from whom we would be learning so much today, from whom we would try to know so much from them, about them, and we'll be talking on the theme, the status of women. Because I have personally requested these women to be a part of this particular show because they have had a very successful life journey, which has been tough, which has been easy both. So we would like to know from them the various things they have seen in the Indian society with regards to women. Friends, today I would be inviting the women PadmaShri Shovana Narayan ma'am. We all know her as the Kathak Guru. Then we have amongst us today Mrs. Kiran Chopra ma'am. She is the chairperson of Varishth Nagrik Kesari Club, wherein lakhs, not thousands, but lakhs of senior citizens are attached with her. And we have very beautiful Mrs. Kandhari, ma'am. She is from Dubai. She is the vice chairman of Guru Nanak Darbar, Gurudwara. I am sure every person who visits Dubai must have been to the Gurudwara Sahib also. So today I would be inviting these very senior dignitaries. It's in fact my honor, the honor for Weaving Dreams that these personalities are here on our show with us today. We would love to know from them about them and about, we would be talking about the status of women then and now. First of all, I would like to invite Shovana Narayan ma'am to the show. Shovana ma'am, good evening. Namaskar. You're much welcome to the show. Namaskar, namaskar. It's wonderful to be here. And Gagandeep thank you. And you're doing amazing work and with your weaving dreams and also the work that you're doing for the cause of women and for the empowerment of women in different walks of life, in different ways. Thank you so much, ma'am. And it's an honor that whenever I request you to be here with us, you always accept my request. It may be by book launches, it may be the conferences that we organize in Delhi, or it may be my talk shows. Thank you so much for always being there. I would like to tell the audience that Shovana Narayan ma'am is a part of my book also, wherein she shares her complete life journey. The name of the book is Big Dreams, Bigger Achievements, wherein ma'am shares complete life story from her childhood till her present situation, her present position. Thank you so much, ma'am, for being there always for me and with me. Thank you. So, I would like to invite Kiran Chopra, ma'am, to the show. Kiran, ma'am, namaskar ji. Good evening, ma'am. Namaskar. किरण चोपड़ा मैम का तो मुझे नहीं लगता है कि लाइक अदर पर्सनालिटीज शोभना मैम और बबल्स मैम के जैसे कुछ भी आई नीड टू इंट्रोड्यूस हर एवरी पर्सन नोज यू किरण मैम स्पेशली जो आपका वरिष्ठ नागरिक क्लब है जिसमें लाखों लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं और आप उन सबको आजकल आपका एक सीरीज भी चल रही है जहाँ पे सब सीनियर सिटीजन्स अपने टैलेंट को शो कर रहे हैं सोशल मीडिया पे आप उनको इतना ज़्यादा प्रमोट कर रहे हो आई एम रियली श्योर इतनी ज़्यादा वो आपको ब्लेसिंग्स और गुड विशेस देते हैं दैट्स अ वेरी अमेजिंग वर्क दैट यू आर डूइंग मैम Thank you. Thank you. I feel honored to be part of this discussion, dear Gagandeep. It's a very good topic you have chosen today. I feel really good to interact with you and interact with the Shobna ji and Babal Kandhari ji. It's really a good topic and it's a wanted topic. Every woman of the country want to know their rights and their upcoming achievement. Everybody want to know, and this is a very good topic, and I feel I'm a very important part of these kind of discussion.
I'm a woman. Like, I want to participate in every field of life. I want to discuss every issues of women. So I feel very good. You have invited me for this discussion. I feel very honored. It's honor for me, ma'am, that you are here, and I would like to tell all the audience that I was an ordinary professor around 4 years back, and as I always tell Kiran, ma'am, that it's you who encouraged me for writing books. It's you who encouraged me further for the conferences and all, because the first book that I wrote, Weaving Dreams into Reality, और वही फिर हमने अपने organization का नाम भी रखा है, Weaving Dreams into Reality. Kiran, ma'am, is the first personality, is the first participant in my first book, wherein ma'am she was a life story, a successful life story. Thank you so much, ma'am, because of your support that I'm trying to do all these things. Thank you so much. Thanks. Now I invite Bubbles Kandhari, ma'am. Beautiful lady Bubbles Kandhari, ma'am, from Sat Shri Akal, ma'am. Good evening from Dubai. Kandhari ma'am and Kandhari, they don't require any introduction. As usual, as I just said, every person who has been to Dubai or even has not been to Dubai are aware about the great work that you are doing, about the Gurudwara Sahib that you have made there. And it's an honor for us, CB ma'am, to the KC Dubai. I think for all the days that we spent there, almost every day we used to visit Gurudwara Sahib. ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪੀਸਫੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ in a different country than India, wherein the religion is different than Hinduism and Sikhism in ਉੱਥੇ practice ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਤੇ apart from that ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜੋ ਸਿੱਖ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਲਈ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, the major credit goes to you. And so I'm very grateful to you for being here on this show. Sat Shri Akal. Thank you so much. It is all Guru di meher te Guru di kripa hundi hai, and then things happen. But very nice of you to have me on the show. Thank you so much. And as everybody has already said, you do a great job. So I shall be reiterating the same thing. Okay, weaving dreams and your work is absolutely wonderful, and please keep doing that. You have all our blessings. And of course, a big hello to all the viewers and to our panelists, Shovana ji and my dear friend Kiran Chopra ji. Big hello, and I'm sure we will enjoy this show together, discussing things that are close to our heart. Yes, ma'am. So today we will be talking about women, the status of women then and now. Then means the previous timings, the ancient timings. That as we all are aware that पहला की हुंदा सी scenario हुन ता बहुत change हो गया. पहला की हुंदा सी because you know as we always say that the status of the women in any society that only depicts the social, economic or condition, emotional condition of the complete nation. जो साडा एक women ਦਾ status ਹੋਏਗਾ ਉਹੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਡਿਪਿਕਟ ਹੋਏਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਜ਼ ਅ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਵਿਮਨ ਵਰ ਰਿਗਾਰਡਡ ਐਜ਼ ਸਿੰਬਲ ਆਫ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀ ਚਿਚਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, women were not treated very nicely, ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ unequal ਜਾਂ bad treatment ਮਿਲਦਾ ਸੀ। There were so many evils like we can say dowry system or child marriage or female infanticide, especially ਬਹੁਤ earlier ages ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ भी बहुत देखा जाता है, but still now because the women are gaining advancements and they are attaining success, and you people are actually the example of the statement that I'm saying, because you have been successful in different fields now. So therefore we would be discussing कि पहला की सी हुन की है, what do we expect in future? Have we seen any changes or not? This is what exactly we would be trying to talk today. So first of all, Kandhari ma'am, if we talk to you, what do you think according to your religion? What do you think कि पहला की सिका की state सी की पहले women थी? What was the situation earlier? Okay, to understand the status of women in Sikhism, we have to go back a little in history. The status of women in India has been subject to many changes over a span of recorded Indian history. Their position
deteriorated early in India's ancient times, as you were mentioning. So, brief reference about social inequalities of that period will help to appreciate the doctrines adopted by the Sikh gurus. For centuries, the women were downgraded, denied the right to property, false sense of impurity because of menstruation or childbirth. Sati, these were, and they were deliberately deprived of education because, etc., etc. These were this is how it led to deterioration of women's position in society. So it was in this chaotic era that Guru Nanak Dev Ji, the great reformer of the East, was born. So Sikhism was founded by Guru Nanak Dev Ji towards the 15th century with a new set of social values, new customs, and institutions. Thus, Guru Nanak Dev Ji laid the foundation of a new type of society in India. Sikhism provided religious doctrines for the foundation of an egalitarian society. He realized equalities in society cannot be reformed without first changing the religious and doctrinal basis of a society. Thus, Guru Nanak Dev Ji, as well as his 9 succeeding gurus, worked to reform and redefine the social and religious fabric of the time. So, Guru Nanak Dev Ji took the first step in this direction by writing in praise of Shri Guru Nanak Dev, Shri Guru Granth Sahib Ji, in Shri Guru Granth Sahib Ji about the women. जिस तरह तुसी हुने ओही कोट मैं सोच रही थी तुसी क्या है कि it's the famous one that where he has incorporated this so क्यों मंदा आँखें जित जम्मे राजान, exactly what I was trying to say. So which meant that from the women, in gist I'm saying, actually not just the one line, but to summarize the whole thing, was that from the women is our birth. In women's womb we are shaped. To the women we are engaged and married. And so why call a woman evil who gives birth to kings and all? So this declaration definitely requires women to be placed in high esteem. Gender equality, again, Guru Nanak Dev Ji introduced the concept of Sangat, where men and women can sit together and equally participate in reciting hymns in the praise of Lord, and also eat common meal together in the institution of Langar. Then again, Sikhism condemns sati, women burning themselves on their husband's funeral pyre. Female infanticide and ritual of dowry, again, was reprimanded. Widow remarriages were allowed. Earlier, only men could remarry, which was so unfair. So that was also taken into consideration. Then again, Sikhism also places great emphasis on education, educating the women. And Sikh women were also cast in the role of saints and soldiers, just like the men. Among other steps to enhance the status of all Sikh women, our 10th Guru, Guru Gobind Singh Ji, gave the title of Kaur, which means princess. Now, what more can they do to uplift the status of women? So these were some of the progressive teachings and reforms for the upliftment of the status of women by the Sikh gurus, which were 500 years ahead of their times. I think that somehow summarizes what a position of Sikh women is in society. Correct. So nicely said that how the our gurus have actually tried to give an equality to the women. जिभी तुसी mention किया है कि सो क्यों मंदा के जम्मे राजान. For those who cannot understand Punjabi, it means that the women, because ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ inferior ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, so why to call them inferior? Because they are the ones who give birth to the kings. Apart from that, as you mentioned, langar da pratha ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ equal ਬੈਠਣਾ, ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ, equality बैठना, या sati system, dowry system, female infanticide, and so many other things. Now, coming next to you, Shovana ma'am, what do you think? Have you noticed any changes in the status of the women then and now? By then, I mean the ancient timings, we can say, or probably when you feel that you were a child. Then and now, what exactly do you think कि कोई changes आई है society में? आपके हिसाब से क्या changes आई? वो क्यों पे हम बाद में आएंगे. तो अभी what do you think कि क्या changes आपको समझ में आए? Well, first of all, I would like to say that our society
has been constantly evolving and changing. Now, when we are talking about the status of women, there was a time when even women were equal partners. And not only there was a time, there was in every era, women have shown that they were equal partners in different fields. Yes, we did have women who were also suppressed, so society has never been just one cauldron, of pot, because that had many several layers in between. If in ancient India we did have a Gargi and a Maitri and a Bharti who were great philosophers and scholars that even the great sages of yore, you would bow down to them. For example, even as late as the 8th century, when Shankaracharya had to even, sort of be, there was a woman who was the person who was taken to judge the debate between Shankaracharya and Yajnavalkya. So, no, another one. Now, similarly, so you have so many different, now at the same time, it depends on which era you're talking about women then. When I'm thinking of the same Valmiki's Ramayana and the portrayal of Sita and the attitude of the people of Valmiki in the portrayal of the Rama Sita relationship at different levels and different episodes were very different from the portrayal of the Ramcharitmanas of the 16th century, because there people had changed. And then it was also how you write it, who writes it. So you had differences, but at the same time, in the eighth, from the 8th, 9th, 10th, 11th, 12th centuries, you have had great women who were sages, who were saint poets. You had Andal, you had Akka Mahadevi. Then you, in the 12th, 13th century, you had Laldet from Kashmir. You had Mirabai, a great princess who defied all social norms and came out into and went and even in a so-called paternalistic society. In every era, we've had women who have defied the then so-called norms and also showed that society never existed in one uni-level. It always had several states, and it depended it was always dependent on who was writing about it, Yes. who was acting in which way. Now, today also, coming down to today's society, let us take, even when we talk about the social reformation system, which started off in the 19th century. And you, with Raja Ram Mohan Roy, with the women's emancipation and others, the social reformation. Now, even then, even at that point of time, you did have people like Lakshmi Bhai, Jhansi Ki Rani. You, even earlier than that, you had so many others. So you've had in society different women who have asserted their authority, women who have shown their mettle and courage, and yet you had a large number of women also who preferred to be in the subjugated state. And then there is another level who were in between, who did not know which way to go. So, and now even today, now I'm now talking about 21st century. Let us also take 21st century. Do we have all women coming out? No. You still have the same three layers existing. You'll find in many, even in the so-called most progressive states, where pockets where you do not, where there's so much of women's emancipation, yet you will find women mentally subjugated. Now, when we're talking about subjugation, it is not only the economic subjugation, but it's the mental subjugation. People, even women who are economically independent, are yet mentally subjugated. Now, what do you call that? People, women who are literate, who are so-called educated, are still mentally subjugated.
So what is it? So how do we define? How do we put these kind of categories? How do we categorize them? So why is it that even when I think about 15, 20 years ago, a study was done on even female feticide. I think Bubbles mentioned about, and you mentioned about, that female feticide and other. I'm just picking up that one word, female feticide. When about 15, 18, 20 years ago, I remember the newspaper, when a study was done, it was found that the cases that were being reported of female feticide were largely from government hospitals where there were a certain section of society were coming in. So obviously it was recorded, but there were much larger number of cases in the so-called elitist areas which went unrecorded. So how Correct. do we, so now what do we talk about it? That it was not being practiced then. Let us take also about, specially able children. Why is it that we hear very little about the specially able? Today it's a little different. More parents are coming out in the open, but compared just about 8 years ago, the specially able children of in a well-to-do family were hidden. There was a curtain put across it, but you came to know much more about that in a certain another section of society. So I think this discrepancy or this kind of a dichotomy has always existed, is still existing. But the only thing is that today, because of external environment of say a proactive media, a proactive social voice, a proactive social organizations, more voices are being heard, more things are being heard, and we are getting to know more about the actual different or I can't say actual, but about cases in different sections of society. And it is not only one section of society, but and perhaps that is also kind of a remedial action, an internal churning remedial action of a greater improvement that is making everyone think, whether it is at X level or Y level or Z level. So it is making everyone think, and therefore we are moving more towards a positive, better empowerment of women. Now, even today, when we're talking about empowerment of women, we are just thinking that if we give them economic, and which is true, we give them economic independence, and they become more and more mentally stable. I mean, sort of internally independent and more empowered. But yet at the same time, I think at that time when I was posted in the Rajya Sabha Secretariat, and I had one chance to visit a lot of places, I found that and when we were interviewing people of the labor, and this was not too long ago, just a decade or so ago, that when we were talking about, and I don't think, or 2 decades ago, but I don't think things are any different today, that when we talk to laborer women, you see them toiling, in the fields, in different parts of the country, and ask them, they said, yes, we know about our rights, we know about it, but what do you do about social sanction? And today I am earning, my husband is drinking it off, but at the same time, because I am not being able to bear a male child, I am being abused by my own mother-in-law. And she said, I am ready to walk out of the house. I know of the laws, but who will, what about the social part of it? So now, people are overcoming the fear of the social stigma, but yet there is a large section still chained to the fear of a social stigmatization. But So yeah, probably the what you were positive trying part to of say it is is that that people earlier, are coming out of it. So there has been so a probably very by what positive change.
Yeah, so probably what you are saying is earlier also we were witnessing such things, but the degree to which that we were witnessing such things has lowered down. And one important thing that I gathered from what you said was that the books that were written earlier or the scriptures that were written earlier, they were probably written according to the mindset of the person who is writing, according to the perception or the viewpoint of the person who is writing the books. So what he Absolutely. has been saying If in I the write story. it as a devotee, I will write everything good. If I write it as a critic, I will find faults with everything. If I write it as a eulogy, I will write fabulous eulogies. So it depends on the writer and the state of mind of the writer. But Very correct. today, the good part of it is that you have so many different avenues. So it is not just one point of view which is being projected, but you have so many different voices projecting it, and it's on record, which is either written record or a visual record or audio record. So you have, so it depends now here the judiciousness lies in the viewer, the listener, or the reader, that how do you, and whether you're being able to take all the different material available to you, and then you arrive at your own conclusion. But all said and done, the positive part of it is that we are moving forward. Women are proving time and again that if they have that inner strength, and once they summon up their inner strength and courage, they overcome hurdles. Even a mountain can be crossed, and even a tempest will be, sort of, they will face the tempest. But Yes, the correct. courage has to come from within. They will Yes, and face I all, think and they do it. That will and the courage and determination and fortitude that a woman possesses is amazing. Hats off to and I that. think Kiran ma'am has must have witnessed all these things क्योंकि किरण मैम आपके साथ तो लाखों लोग लाखों विमेन जुड़े हुए हैं शोभना मैम ने भी बहुत अपनी अपनी परसेप्शन से शेयर करा है और कन्हारी मैम ने भी अपनी परसेप्शन से शेयर करा है अकॉर्डिंग टू व्हाट रिलीजन हैज टॉट अस एंड शोभना मैम ने शेयर करा है कि क्या एंशिएंट टाइम में था और अब क्या है मैम अकॉर्डिंग टू यू अब नाउ विल मूव फॉरवर्ड अकॉर्डिंग टू यू जैसे आपका बचपन था probably yes you were born in a very good family educated family तो आपको मैं मानती हूँ कि इक्वालिटी डेफिनेटली इक्वल ट्रीटमेंट मिला होगा एंड बट अदरवाइज जो आप आसपास सब देखते थे एंड नाउ आपके साथ इतने ज्यादा जो सीनियर सिटीजन्स जुड़े हुए हैं तो उन्होंने भी जरूर अपने कुछ शेयर करे होंगे एक्सपीरियंसेस सबका टाइम प्रोबेबली जब आपका चाइल्डहुड था और आज का जो सिनेरियो है आपको क्या लगता है कि क्या चेंजेस आई हैं First of all, I felt very bad. My internet got disconnected. I believe it was mine only, or all of you were disconnected. नहीं मैम आपके साइड पे था थोड़ी सी प्रॉब्लम आजकल बहुत क्योंकि सारा बर्डन इंटरनेट पे है तो वो अभी वो चलता है So I could not hear Shovana ji and Babal ji, but I know them very well. I know their thinking also. I know their views also. It must be very high about women. But I must want to share. जैसा कि हम देख रहे हैं सब लोग कि साइंस बहुत तरक्की कर रही है जैसे साइंस तरक्की कर रही है वैसे वुमेन भी तरक्की कर रही हैं एम आई राइट बबल जी बिल्कुल बिल्कुल जी शोना जी एम आई राइट हम लोग बिल्कुल सही मैंने कहा ना कि विमेन लोग बहुत तरक्की कर रहे हैं वो अगर वो माउंट एवरेस्ट को भी पार आजकल तो माउंट एवरेस्ट तो कुछ नहीं है उन्होंने तो पार कर ही लिया तो जैसे साइंस तरक्की कर रही है वैसे वैसे वुमेन भी तरक्की कर रही है महिलाएं तरक्की कर रही हैं बेटियां तरक्की कर रही हैं और हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो मंगल ग्रह में पहुंच गए हैं परंतु एक बात मुझे बार बार ये मेरे दिल में आती है मेरे दिमाग में आती है कि मंगल में तो हम लोग पहुंच गए पर हमारे जीवन में मंगल तब आएगा जब हमारे देश की सभी महिलाएं स्पेशली गांवों में रहने वाली महिलाएं खुश होंगी आर्थिक रूप से स्वतंत्र होंगी और सामाजिक रूप से इंडिपेंडेंट होंगी
पॉलिटिकली भी आगे आएंगी, तो हमारे जीवन में मंगल आ सकता है। क्योंकि महिलाओं के साथ ही घर है, महिलाओं के साथ ही समाज है, महिलाओं के साथ ही देश है। अगर हम किसी भी देश की और समाज की या घर की स्थिति देखना चाहते हैं, पोजीशन देखना चाहते हैं, या उनकी तरक्की देखना चाहते हैं, तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि एक सही थर्मामीटर है वुमेन। अगर हम किसी भी समाज की स्थिति देखना चाहते हैं, देश की स्थिति देखना चाहते हैं, तो उनका थर्मामीटर महिलाएं हैं। तो हम महिलाएं एक समाज की और देश की एक थर्मामीटर है जो हम बता सकते हैं। जैसा कि थोड़ा सा मैंने शोभना जी का सुना, ड्यू टू इंटरनेट आई कुडंट हियर, पर जो बता रही थी कि डिफरेंट इरा में बहुत सी महिलाएं थी जो अपने आप को डिफाइन करती थी, जिनको हम डिफाइन कर सकते हैं। यू आर राइट, क्योंकि वैदिक टाइम में वुमेन की पोजीशन डिफरेंट थी और मध्यकालीन में डिफरेंट थी। और जैसा कि बहुत सी पहले वैदिक में बहुत स्त्री को सम्मान था, महिलाओं को सम्मान था, राइट थे पूरे। और उसके बाद मध्यकालीन जो समय आया उसमें वही फीमेल फिटिसाइड, दहेज प्रथा और विधवा, सारा कुछ वो जो समाज की बुराइयां थी विमेन के प्रति, वो सारी हो रही थी। तो जैसा कि शोभना जी ने कहा कि राजा राममोहन राय जी और स्वामी दयानंद जी वो आगे आए, उन्होंने बहुत समाज का सुधार किया, बहुत सी बुराइयों को दूर किया। और मैं तो सही मायने में समझती हूँ कि जो आजकल हम महिलाएं हैं, जो हम महिलाओं की स्थिति है, वो स्वामी दयानंद जी की और राजा राममोहन राय की एक देन है हम महिलाओं को, कि उन्होंने हमें उस समाज की बुराइयों से बाहर निकाला। और जैसा कि अभी जो गगनदीप जी पूछ रही थी कि मेरे बचपन में क्या था, मैं आपको बताऊं, मेरी जो परिवार है एक एग्जाम्पल है दुनिया के लिए, समाज के लिए, देश के लिए। क्योंकि हम 6 बहनें हैं और 6 बहनों को मेरे फादर ने बहुत अच्छी एजुकेशन दी, संस्कार दिए, माँ ने वैल्यूज दी। और सही मायने में आप पूछो तो सभी मेरे फादर को पंडित जी बोलते थे। आई बिलोंग टू ब्राह्मण फैमिली, तो उनको कहते थे पंडित जी आप इतनी लड़कियां कर रहे हो, क्या कर रहे हो, बहुत मुश्किल हो जाएगी और आपके लिए बड़ा जीवन मुश्किल हो जाएगा, लड़कियां आपकी ज्यादा हो गई। तो मेरे पिताजी किसी की परवाह नहीं करते थे, वो कहते थे कि मेरी लड़कियां मेरे लड़कों के बराबर हैं। और सभी हमें कहते थे वो पंडित जी की बेटियां, पंडित जी की बेटियां। और आपको बताऊं एक समय अब ऐसे आ गया जब वो हम लोगों को देखकर कहते थे इनके फादर पंडित जी हैं, किरण चोपड़ा के फादर पंडित जी हैं। ये समय बदला, क्योंकि जब हम पैदा हुई, जब बड़ी हो रही थी, हम पढ़ रही थी, हम बहनें थी, तो सबकी नजर हमारी तरफ होती थी, ओ इतनी बेटियां, पंडित जी क्या करोगे। तो पंडित जी को लोगों ने कोशिश की कि बेटियों को पढ़ाया ना जाए, बेटियों को एक ही तरह के, एक कहते थे ना थान, एक थान होता था कि कपड़े का थान ले लो जी, एक जैसी ड्रेस पहना दो। तो मेरे फादर को था कि मेरी बेटियां बेस्ट पढ़ेंगी, बेस्ट कपड़े पहनेंगी, बेस्ट अपना चलेंगी अपने समाज में और हर चीज को हासिल करेंगी जिनको वो हासिल करना चाहती हैं। तो मेरे फादर की, मेरे पेरेंट्स के जो अपने उनके व्यूज थे बेटियों के प्रति, बहुत सोच जो बहुत बड़ी थी, उसी सोच से हम आगे बढ़े हैं, उसी सोच को हम अभी भी लेकर चल रहे हैं। जो मुझे संस्कार मिले हैं मेरी जननी माँ से मिले हैं मुझे, और मेरे फादर ने हमारी सोच बहुत बड़ी की है। अभी जो आजकल की स्थिति है, महिलाओं की स्थिति जो है, अभी जैसे शोभना जी बोल रही थी कि 3 लेयर है, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि 3 लेयर है। हम जैसी महिलाएं जो अभी इस पैनल में भी हैं, बहुत कम महिलाएं हैं जिनको अवसर मिलते हैं, जिनके पीछे या फादर है, या स्ट्रॉन्ग पति है, या स्ट्रॉन्ग बेटे हैं, या समाज है जो अपने आप में एक हिम्मत रखती हैं आगे बढ़ने की, एजुकेशन के थ्रू, अपनी नॉलेज के। I think there is again a problem of connection that side. So by the time Kiran ma'am joins us back again, Mrs. Kandhari, I would like to ask you, because you must be knowing so many women from different strata of the society.
जी. They may belong to a very higher class, or they may belong to very middle class, or even lower class, because you have your own business, and so many women must be working. Then also one thing, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ women ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਫਰਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਆਸ-ਪਾਸ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ one thing. And second thing, I would like to know from you ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ women ਦੀ upliftment ਲਈ. I will not say empowerment here. And because empowerment ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਏਗਾ ਉਹ empowerment ਦਾ term ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਏਗਾ ਪਹਿਲੇ at least equality and even prior to that respect. So empowerment is much later. Us to pehla respect and equality li what are you personally doing in the society? Two, three questions, you've kind of put them together. But first of all, I'd like to tell Shovana ji, when it was so nice to hear all the women that have been doing such great things during the times when it was difficult. But they were few and far in between. Most of the general people, I feel, were what we were talking about during those times. I mean, I appreciate, and that's why you're able to name them, that this one and that, and Jhansi Ki Rani, etc., which was absolutely wonderful. Even we have a lot of women we know. But the reason we are talking today is because most of the women at that time were having these issues. And that is why the topic has come up. Now, coming to the point you said about what is the status today of women, in the sense of how do they react today, how they are today. Is that what your question was? Right? Correct. Yes. And so I see a lot of change. Like, if we come back, even talk about 2 generations ago, it was like my grandfather. He was married. My grandmom was his second wife. Why? Because the first wife passed away when the kids were very young, and so her sister was just married to him. Okay, she had no say in it, and her stepson was just about 2 years younger to her. What is it? And just Rajinder Singh Bedi, the novel see, Ek Chadar Maili Si, where in the other side, if the husband dies, the woman is married to the devar. She has no say. Chadar dal de shadi ho gayi. Those were also the stakes. Shovana ji, I'm just trying to say that. I'm not trying to say anything against what you're saying because I admire it. But this side is also there. So those people, they had no say. Then came the second generation, the earlier generation before us, which was like my mom and dad. Okay, my mom was a graduate. She got married to my dad, but not the way it was. She met them, they met each other, and they decided that it was a stage better. And then came the present stage, where we have, today's girls and their parents. They really are open-minded. The girl's choice is most important. Also, girls want to study, and some want to have a career, become a career woman, which is taken very well. So I guess this is a great change for the women. Now, coming to the fact about how I feel about it today, I definitely see a lot more respect for the women today, whether they belong to rich or to poor. This is because women of today are more aware of their rights. And to some extent, the dignity of labor is also acceptable. People are able to understand and appreciate it. Whether you are a waiter or whether you are a great businessman, it doesn't matter. There has to be dignity of labor. At least that's what I have noticed here. Though I must say and confess, there are certain communities, the male chauvinism still exists. As they're brought up with that psyche, that they are superior to women. So hopefully in time, that will become less. This is my observation. I stand corrected if possible. Fine, totally correct. And I think this is what exactly Shovana ma'am also said, that what you are saying, like you're mentioning the name of the novel, this is what ma'am also said, that everything, all the novelists or all the books that were written, that were based on the perception of the person who writes, or what he sees around himself or herself. Exactly. What he sees in the society, this is what they pen down. Kiran ma'am, आपके साथ misunderstand me. क्या सॉरी गगन जी क्या पूछ रहे हैं क्योंकि मेरा तो बार-बार
हाँ जी, हाँ जी। मैं ये कह रही थी कि जैसे आपने बताया कि आपके बचपन का और आपका और अब का, आई एम ट्राइंग टू नो कि वो लोग, बिकॉज़ आपका तो इतने ज़्यादा लोगों के साथ एसोसिएशन है जो इतने अच्छे फैमिलीज़ को नहीं भी बिलॉन्ग करते होंगे। बिल्कुल लाइक करते हैं। Kandhari ma'am is saying कि probably what she has seen around her कि the women are enjoying equality. बट यू ऑल्सो मस्ट हैव सीन इवन आज के डेट में पॉसिबल है कि इतनी ज्यादा इक्वालिटी नहीं है, अभी भी मेल शोविनिज्म इतना है। आपको आपके आसपास को देख के आपको क्या रियलाइज होता देखो, मैं सब तरह के लोगों को डील करती हूँ, सब लोग तरह के लोगों को मिलती हूँ, मासेस को भी और क्लासेस को भी। है? अभी बिल्कुल। फर्क है। हम लोग बिल्कुल ठीक, शोभना जी ने कहा था 3 लेयर में अभी भी महिलाएं बटी हैं, भी बहुत जिनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिनको समाज में रिस्पेक्ट मिलती है, और उससे कम और बिल्कुल नीडी महिलाएं भी हैं जिनको ना तो रिस्पेक्ट मिलती है और ना उनको एक अवसर भी नहीं मिलते समाज में आगे बढ़ने के लिए। जो टैलेंटेड भी हैं पर उनको अवसर नहीं मिलते। जैसे कि मैं एक काम करती हूँ चौपाल नाम से। चौपाल में उन महिलाओं को माइक्रो फाइनेंस दिया जाता है जो टैलेंटेड हैं, जो आगे बढ़ना चाहती हैं और सेल्फ रिस्पेक्ट से जीना चाहती हैं, वैसी महिलाएं हैं। पर अगर उनको फाइनेंस की जरूरत है आगे बढ़ने के लिए, चाहे वो छोटी सी रेडी लगाना चाहती हैं या कुछ छोटा छोटा काम करना चाहती हैं, ऐसी महिलाओं की मैं बात कर रही हूँ। अगर उनको फाइनेंस की मदद है तो देयर इज एक्सप्लॉयटेशन अभी भी समाज में है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि आई एम जर्नलिस्ट ऑल्सो, आई एम राइटर ऑल्सो, एंड आई एम डीलिंग ऑल काइंड ऑफ वुमेन। तो इसमें एक्सप्लॉयटेशन है। अगर हम महिलाओं को, चाहे वो छोटे वर्ग की हैं, चाहे क्लस्टर एरिया की हैं, या मध्यम वर्गीय सोसाइटी से हैं, या अपर क्लास से, अपर क्लास को इतना मुश्किल नहीं होता, मध्यम वर्गीय और जो बिल्कुल लोअर लोअर तबका है Yes, उसको मैं बहुत, यही पूछना चाह रही हूँ। यस, उनको बहुत फर्क होता है, और उनकी एक्सप्लॉयटेशन भी होती है, या उनके लिए चांसेस नहीं होते, या उनको कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं होता, आगे बढ़ाने वाला नहीं होता। तो एक तो सबसे पहले अगर हम महिलाओं को एक लेवल पे लाना चाहते हैं, चाहे वो सेवा बस्ती से हैं, क्लस्टर एरिया से हैं, या मध्य वर्ग से हैं, तो उनको हमें इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से सशक्त करना होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दीज डेज। अगर हम उनको आर्थिक रूप से सशक्त करेंगे या उनके लिए एक ऐसे अवसर प्रदान करेंगे जिससे वो सेल्फ रिस्पेक्ट से अर्न कर सके, आगे बढ़ सकें, तो इससे बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि वी ऑल नो एम्पावरिंग वुमेन मीन्स एम्पावरिंग ए नेशन। तो अगर हम नेशन को एम्पावर करना चाहते हैं तो हमें हर महिला को, जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का था अंत्योदय, हर लाइन में पीछे खड़ी होने वाली महिला जो है, झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाली महिला है, सेवा बस्ती में रहने वाली महिला है, क्लस्टर एरिया में रहने वाली महिला है, उसको हमें आर्थिक रूप से सशक्त करना होगा। क्योंकि अभी भी कुछ महिलाएं हैं जिनको अवसर प्रदान होते, सभी को नहीं होते। क्योंकि मैं सबसे मिलती हूँ, सबसे डील करती हूँ, हर तरह की महिलाएं। और जैसे मैं हूँ, बबल जी हैं, शोभना जी हैं, आप हो, आई थिंक हम लोगों को कोई मुश्किल नहीं है। हम लोग एक सशक्त परिवार से भी हैं, हमारी बैकग्राउंड अच्छी है, हमारे एजुकेशन अच्छी है, पर बहुत सी महिलाएं हैं जो टैलेंटेड भी हैं, आगे भी बढ़ना चाहती हैं, पर उनके लिए रास्ते कठिन हैं। और अभी यही बात है कि आज मोदी जी को हमारे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देना पड़ा। क्यों देना पड़ा? क्योंकि अभी भी जो सोच है हमारी बेटियों के प्रति बड़ी मुश्किल है। अभी भी फीमेल फिलिसाइड है, जितना मर्जी हम कह दें कि कम हो गया, बहुत है। अभी भी सोच और हमारी जो मानसिकता है वो वैसी है। क्यों है कि इनके, मैं जब लोगों से मिलती हूँ तो मुझे 4 मेन रीजन समझ आते हैं कि ऐसा क्यों है अभी तक। जो मर्जी कह लो, जितने मर्जी हम आगे बढ़ जाए, मंगल में भी पहुंच गए, आगे बढ़ गए, हर जो फील्ड है, चाहे वो अभी सेना में भी लेडीज आगे आ गई हैं, महिलाएं आगे आ गई हैं, अर्धसैनिक बल में भी आ गई हैं, हर जगह महिलाएं आगे हैं, पर फिर भी सोच बहुत वही की वही है। बेटा चाहिए, क्यों चाहिए? कि वंश कैसे आगे बढ़ेगा। बेटा चाहिए क्योंकि लास्ट में मुखाग्नि कौन देगा। बेटा चाहिए, बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा। बेटा इसलिए चाहिए कि आजकल सामाजिक इवल जितने मर्जी, स्वामी दयानंद जी ने भी बचाने की कोशिश की, बहुत आज भी बहुत अलर्ट है हम लोग जैसी फैमिलीज में नहीं है, पर बहुत सी फैमिलीज में है
कि डॉरी सिस्टम भी है, एक्सप्लॉयटेशन भी है, डोमेस्टिक वायलेंस भी है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत है। तो ये चीजें हैं, तो इसलिए सब लोग कहते हैं कि बेटा ही चाहिए। खुलेआम नहीं कहते, खुलेआम से लोग बहुत बड़े I think again there's a connection problem. Shobna ma'am, now if I come to you, what Kiran ma'am was just mentioning, there are certain families because she actually maybe being a journalist also, and maybe that she belongs to a family of politicians also, she interacts with so many people who may not be enjoying the same level that very fortunate people may be enjoying. Aren't they? Now, if you tell me, एक जगह पे जो सिर्फ equality or even subsistence or even respect, and on the second side, like you are a Kathak guru. No, probably you may, because I remember you told me also, probably when you, the first time when you wanted to learn dance, there was some problem, I believe. If I am right, please correct me. And now you've got numerous students, girls who are learning dance. Has it ever happened that some girl really wants to learn dance? The family is not allowing, but she contacts you and something like that. Well, गगनदीप जी, जब मेरा जो जन्म हुआ था, दशकों 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 पहले हुआ था, और उस जमाने में girls were not considered a commodity. They were considered कि ठीक है, but बेटा जब मेरा जन्म हुआ था. Now to even Bubbles, another thing what you have mentioned. Yes, today information system is far more. You get to know much more, but you get to know about people. It also depends on who's writing. Earlier in the 16th century, 15th century, who were writing? The courtiers were writing. How many of the normal people were there? So how do you know about the normal people? There were many brave people, many women who came out, but you don't know about them because you only read about the courtiers and what they have written. So, but there were examples of the very, very downtrodden women, but there were examples even at that time of women who had come out and who have made that mark on their own, defying even social norms of that time. Or another thing that one should not forget is the kind of job when we're talking about the medieval period and the social norms, कि क्या external circumstances थे? Why did the sati pratha come about? Why did the dowry pratha come about? There were reasons for it. Now, this is not the forum to go into it, but all these led to, but in spite of that, उस समय भी downtrodden बहुत थे, कुछ निकले हुए थे, but there was also a large indecisive lot. So that is what I've always been saying, कि it is not only today. आज हम ज़्यादा जा रहे हैं because you and I belong to a certain elite class. So we know about each other. Still now, when you're reading about papers, in papers, you're still reading about, look at all those unprivileged women. So because the information system is far better today. So you get to know much more today. That is one. Number two, to answer गगनदीप आपकी जो है कि जब मेरा जन्म हुआ था उस समय सच एकदम नहीं था, क्योंकि डांस एज अ प्रोफेशन फॉरगेट इट, सिखाना तो दूर. लेकिन हमारे घर में, क्योंकि हमारे पर्टिकुलरली नाना की तरफ से बहुत प्रोग्रेसिव लोग थे. मेरे नाना उस समय 1923 के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे. उनकी बहन मेंबर ऑफ असेंबली थी 1936 में, 1936. सो इट वाज अ वेरी प्रोग्रेसिव फैमिली. तो हमारे यहाँ तो हर एक बच्चा, लड़का हो या लड़की हो, दे हैड टू बी given learning in all aspects of fine arts and performing arts and everything, vidya in all its respect. So I grew up with Sanskrit literature, Hindi philosophy, Indian philosophy. I grew up with Bhagavad Gita and all that. But उस समय भी जमाना कहता था, in fact
when they, जैसे बच्चों से पूछते हैं कि what will you do when you grow up, then I said dance. They said, come on, that's not the done thing. And they would tell ridicule my parents कि अभी लड़की बड़ी हो रही है, you're still allowing her to dance. Now things have changed a lot, even when, and why things have changed a lot. I'll tell you my own experience as a dancer. You talked about respect. When you reach a certain pinnacle, I mean, today it depends on how you reach the height of success and how the perceptions change about that profession and you and that profession. But if that same profession is done by somebody else, why is it that it is so difficult for people who are in the performing art field to get, and a girl, to get a house on rent or an apartment on rent, even today? I Who mean, is just unfortunately, dependent on performing art? Who is just yes, dependent who's dependent upon performing? dependent on performing arts, exactly. So, Like because you they, already have a separate profession as well, but now you are yes, talking so about someone who is solely dependent yeah, upon it. who are dependent. So it depends a lot. Now I'm talking about now today we are, हम सब कुर्सी की पूजा करते हैं. And let's be frank about it. कैसे वो कुर्सी की पूजा करते हैं. I'm talking about my own experience. That as part of a Delhi government, not Spick McKay, but a similar thing, I was sent to give a lecture demonstration at some school. And when I went, I was not received by the principal at all. Not at all. And this happened only 20 years ago. And I was not received by the principal. I was still in service. I had not retired. And he did not even offer me a chair to sit. And when I was returning without performing, I just, after 10 minutes of humiliation like that, I was returning when somebody must have told him about my official order. And the moment he heard that, he came to the car, literally was falling at my feet when he came to know I was blah, 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 like this and that, higher up in the official order, that why didn't you tell me, where I was not even offered a broken chair to sit on, now I was offered a sofa, and the entire school was rounded up and everything's changed within seconds. What was it? Not the profession, not me as a person, but it was the chair. It was the chair. Now, this is happened with me. So, when we are talking about mindsets, we have to take cognizance of the fact that even today I'm the first one to say people have changed their mindsets a lot, a lot. I mean, if the girl is determined, she does it, and the family is there to support her also with a support. But yet there are families, and there's a large percentage where mindsets have still to change. They still have to change. And the girls also come mindset. They might be educated, they might have the degrees, but they also have to change their own inner mindset and drop on the inner strength and courage. And you find that wherever the girl has done it, irrespective of which economic class she comes from or which strata of society she comes from, she has proved and herself and done wonders. And you have so many examples. It is not only a girl from a very affluent family who can make it. A girl from even the weakest section of society has done wonders because she has set her mind to it. She has changed her mindset. She has the will and the determination and courage to go ahead with it. And yet there are Correct. So several. even if the so that Yeah, means what you are saying is even if the girl belongs to not a very affluent family, but if she's determined to do something, she can attain. Recently, I was speaking to Miss Ida Singhal also. उन्होंने हमें यही बताया जो आप भी बता रहे हो
कि many a times even the girls do not want to, they have a separate, they have a specific mindset. उन्होंने हमें बताया कि हमने कुछ लड़कियों को सेव करा, बचाया, पर वो लड़की ने मेरे साथ ही झगड़ा करना शुरू कर दिया। उसकी चाइल्ड मैरिज हो रही थी कि आपने मुझे क्यों बचाया, मुझे शादी करानी थी। प्रॉपर्टी उसको बचपन से ही उसको यही माइंड में डाला जाता है कि दिस इज द वे यू हैव टू बिहेव। सो व्हेन शी वाज रेस्क्यूड, शी वाज अपोजिंग दैट व्हाई डिड यू रेस्क्यू। देखिए देखिए, इस तरह से बहुत सारी लड़कियां हैं जिनके घर में तो होगा कि आपको सिर्फ चाइल्ड मैरिज करके घर बसाना है, लेकिन फिर भी वो अगर चाहती हैं तो वो निकल जाती है, वो अपना कुछ करके दिखाती हैं। लेकिन जिसको हाँ, तो उसकी अपनी मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर है, उनकी अपनी इनर पर है। अब आप उसको पैसे भी दे दीजिए, उसको आप सब कुछ दे दीजिए, अगर वो चाहे नहीं करना और वो वैसी डरे, अब आपने तो बहुत ही कोशिश कर ली, आपने तो उसको इकोनॉमिकली स्टेबल भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन अगर वो चाहे कि नहीं उसको तो शादी करना ही है, नहीं उसको वो उसी, अगर मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली अगर उसको इट्स नॉट अ हैप्पी मैरिज और उस तरह के, लेकिन पति परमेश्वर है, हम तो इसी को सहेंगे, यू नो दैट काइंड ऑफ अ थिंग, जो ट्रेडिशनल माइंडसेट है। तो I mean, and yet there are women, girls who said, no, I will live life on my own terms. तो आपके पास तो दोनों, so that means we are progressing in the sense that the girls are putting their foot down. They are putting their foot down that this is what I want. Kandhari ma'am, now coming to you, my question, that you are doing big things for the women empowerment or equality, rather I would always say equality only. पता नहीं मेरे को थोड़ा सा equality word ज़्यादा वो लगता है, क्योंकि अभी तक हमारी equality होगी तब हम आगे का सोच सकते हैं। So I would like you to share with everyone कि आप क्या कर रहे हो, तुसे की कर रहे हैं कि वो अपने लेवल पे कि वुमेन को कुछ स्पेशल फील हुए कि हाँ we also exist and we should be recognized. A couple of things मैं कर रही हूँ। एक तो सीगा, as you know, in the Gurudwara we celebrate this International Women's Day. वो इस तरह नहीं कि जिस तरह चलो करना है, the idea behind it is, पहली गल है कि we can show this, you know, mostly in the religion you'll agree that the men folk always take the place and they always tell the women to see picture, or either it's their complex or whatever it is, they do that. So here what we do is, from morning 4 o'clock the services that are there in the Gurudwara, straight to like a right 9:30 तक everything women. And apart from that, which is not very easy because the men are kind of there ready to see कि तुसी कुछ गलत करो and we catch you. Now, of course, they've accepted because the last 5 years we've been doing it. But the thing is, it's not just that. What I do is I take this opportunity to have lectures and talks explaining to them that women, you guys, I mean, you ladies have the inner strength, like you said. You have the inner strength to do things. Have the confidence and have that in you that you can, but आप करके दिखा रहे हो। आपको हर टाइम प्रूव करने की जरूरत नहीं है। Why is it that we have to prove that we are equal to them or better than them? We are better than them. We can do. We have so much inner strength. But all we need is a little bit of push because we've been submerged so long, we have been pushed down. Some of the women have. So उनके लिए एक kind of उनको एक encouragement देते हैं और उनको समझाते हैं कि भाई ये आपके rights भी नहीं है, आपकी ये this is you. Please recognize yourself within and out and stand, not to be overconfident and run around, but just be yourself and have confidence that you can do things, like she said. And मुझे इस बात पे वो याद आ गया, गुंजन सक्सेना, the pilot, the Air Force में जो थी, who with all the, you know, saw the movie recently. So there are women who अगर ठान हुए हम तो हम सब कुछ कर सकते हैं, बस मर्जी ये होनी चाहिए कि हमें करना है, and we should be दृढ़ता कहते हैं वो होनी चाहिए, तो we can do that. So this is what I try to do in the when we have this International Women's Day. दूसरी बात, I'm also connected with the Consulate of India, where we, you know, जो destitute women होती हैं
उनकी कोई प्रॉब्लम्स होती हैं and they are difficult to handle or embarrassing for them, they don't want to talk about it, तो उनको confidentiality चाहिए, तो we talk to them और उनके problems solve करने की कोशिश करते हैं. काफी मुश्किलें आती हैं जब आप बाहर के मुल्क में हो और they don't know whom to go to. So then the Consulate of India, the Indian Consulate helps us and helps them and puts them to us and we try to sort things out. और तीसरी जो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके लिए मैं हमेशा किरण जी की शुक्रगुजार हूँ, बिकॉज शी वॉज मुझसे छोटी हैं. I always admire and appreciate because she put me on this line of young hearts, जो senior citizens होते हैं, उनके हमने एक ग्रुप बनाया. उनको 5 साल हो गए, वो graduate हो गए 90. So हमने I got so inspired and she actually pushed me into it, and not that pushed, I love that push because I am really, it's so close to my heart, and we have the blessings of these people. The reason I'm talking about senior citizens is not just men and women, of course, they all enjoy themselves there together, but the point that the women in the senior citizens, sometimes they have issues, you know, उस उम्र में आके mother-in-law, daughter-in-law के हो गए, या कुछ financial situations हो जाती हैं when they lose their husband, their partners, and they do not have enough, you know, economical, they don't have enough money, financial status is not very good. So always tell them that, look, I mean, you must have that much money in you, with you, so that you have the confidence to move around and do what you want. और जैसे खुदा कहता है ना कि हाथ ऐसे मत हो, आपका हाथ हमेशा ऊपर रहे ताकि आप देने वाले बनो, और वो चीज बहुत जरूरी है for a woman when she comes to a senior status and she somehow, somewhere might want to be dependent on the family, which is not wrong, nothing wrong in that, but dependent in such a way that you don't become a kind of, you don't become totally like you know, like क्या मुसीबत आ गई, ऐसा नहीं होना चाहिए. So this is what we try to teach them in this, and that too again, it's one-on-one basis. They come and confide in you because they have that confidence, and that is so important. So जहाँ भी मैं होती हूँ, अगर इस बारे में कोई मुझे कहता, मैं हमेशा कहती हूँ कि ये सब किरण जी की देन है, and I really appreciate that, Kiran. So these are the kind of to फील्ड where we are, और जहाँ पे मैं हूँ, जितना मेरा दायरा हो सकता है, मैं कोशिश यही करती हूँ कि try to help wherever I can and wherever God tells me. मेरे को आपकी बहुत बहुत अच्छी लगी कि हाथ हमेशा ऊपर हो, और उसके साथ साथ आई वुड लाइक टू ऐड, जैसे मैं आपको देखते हुए आंखें हमेशा झुकी हो जब हम किसी की हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं. वेरी नाइसली पुट इन. Kiran ma'am, now we'll come to the last question which I'll be asking to each one of you. According to you, especially in our country, India में, because आप सीनियर सिटीजन्स के साथ में दोबारा से एम्फसाइज करिए, बहुत ज्यादा जुड़े हुए. अब जैसे बहुत विमेन को लॉस अब जो नए, बिकॉज इतनी ज्यादा देयर वर प्रॉब्लम्स विद विमेन, तो उनको हमारे कंट्री में लॉ बहुत मिल गए कि अधिकार मिल गए कि अगर कोई आपके साथ गलत करता है तो आप आ सकते हो और हमें बता सकते हो, सो दैट द प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व. पर कहीं ना कहीं, क्योंकि आपकी मैंने बुक्स भी पढ़ी हैं, वहां पर भी मेंशन करा है कि कुछ जगह पर इम्प्लीमेंटेशन में कहीं पे ये प्रॉब्लम आई कि कुछ विमेन ने, especially some young women, have misused those laws जो उनके फेवर में होने चाहिए थे. जेन्युइन केस नहीं थे, पर उन्होंने मिसयूज करके, आपकी जैसे आपने बुक में मेंशन भी किया था, इवन 90 years old विमेन के ऊपर उन्होंने केस कर दिया या उनको परेशान करा. व्हाट यू हैव टू से कि ये क्यों मिसयूज करा जाता है, और जो जेन्युइनली लड़कियां इतनी प्रॉब्लम्स सह रही हैं वो बाहर नहीं आ सकती. बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका गगनदीप जी. पहले तो मैं अभी आपके जो लोग अटेंड कर रहे हैं, इसको वेबिनार को देख रहे हैं, बहुत से लोगों ने एड्रेस किया और बहुत से लोगों ने पूछा मुझसे कि आप, उनका नाम मैं भूल रही हूँ, काफ़ी लाइन आ रही थी आगे, कि आप कैसे अपने थॉट्स को सब लोगों में पहुँचाएं. तो मैं उनको कहना चाहूँगी कि मैं आई एम ए मोटिवेशनल स्पीकर ऑल्सो एंड आई एम राइटर. मैं बुक्स भी लिख रही हूँ, लिख कर बोल कर सब जगह पे पहुँचती हूँ. और सबसे बड़े जो मेरी लाइफ का है वो है कि मैं नहीं होनी चाहिए, मैं नहीं है, हम हैं. जो हमारे 4 अब पैनलिस्ट हम लोग हैं, इसमें आई एम रियली ग्रेटफुल कि 2 पैनलिस्ट तो मुझे कह रहे हैं कि आपने हमारा साथ दिया, आपने मुझे मोटिवेट किया. दिस इज अ सक्सेस ऑफ माय लाइफ.
कि मैं हमसे चलती हूँ। अगर आसपास मेरे जो फ्रेंड्स हैं, जो महिलाएं अच्छी अच्छी हैं, वो आगे बढ़ रही हैं और उनका मैं किसी तरह से मोटिवेट कर सकती हूँ, तो दैट इज द सक्सेस ऑफ माय लाइफ। ये मेरा एम है कि हमसे हम आगे चलते हैं। अगर वो पुराने लोग बबल जी कहते सी ना, जे तुहाडा आसा पासा खुश है तो तुसी भी खुश हो, लाइक दैट आई ऑलवेज एंजॉय दिस थिंग कि मेरे आसपास वाले खुश हैं। दूसरा ये है कि संदीप सिंह जी भी बबल जी को कैसे बहुत अच्छा बता रहे हैं। अभी मुझे तो लगता है मुझे एक एक का पढ़ के जवाब देना चाहिए, पर ठीक है। आपने जो पूछा कि मिस यूज का, मिस यूज बहुत होता है, क्योंकि मैं सीनियर सिटीजन से भी डील कर रही हूँ और लड़कियों का भी काम बहुत कर रही हूँ। तो उनमें से मुझे लगता है कि बहुत सी लड़कियां जो आपने, क्योंकि अब बहुत से राइट्स मिले हुए हैं लड़कियों को, महिलाओं को बहुत से राइट्स मिले हैं, और वो उस समय मिले थे जब महिलाओं पे बहुत अत्याचार हो रहा था। अब इस समय क्या है कि महिलाएं, एक महिला दूसरे महिला पे अत्याचार कर देती है, या एक डॉटर इन लॉ मदर इन लॉ पे आरोप लगा देती है कि इन्होंने मेरे को डोमेस्टिक वायलेंस का कर देती है, या कुछ कर देती है। कई बुजुर्गों के हाथ कांप रहे होते हैं, उन पे डोमेस्टिक वायलेंस का लग जाता है। 498 के अंडर बहुत से केसेस मेरे पास आते हैं, और जब मैं बातचीत करती हूँ तो सॉल्व भी हो जाते हैं, क्योंकि अंदर कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में होता है लोगों की कि मदद करना। और दूसरा ये कि कई जैसे ओल्ड लेडीज हैं 80-90 वाली, तो उनके बच्चे भी उनको मिसयूज कर रहे हैं। हर तरफ से मिसयूज हर सोसाइटी में होता है, हर सोसाइटी में अच्छे बुरे भी होते हैं, हर काम का अच्छा बुरा इम्पैक्ट भी होता है। हर महिला का जो काम है, अब जैसे शोभना जी कह रही थी कि हमें अभी जो उनकी बात मैं सुन रही थी, अब हमें ये नहीं अपने राइट में मांगना कि है प्रूव अवर सेल्फ कि हम केपेबल हैं हर काम करने के, हम आगे किरण बढ़ मैम, सकते आपके हैं। साइड से ना, अगर यूट्यूब ऑन है तो उसका प्लीज म्यूट कर दीजिए, क्योंकि आवाज इको हो रही है। आपके साइड से अगर कुछ और है तो उसको मेरी बिकॉज साइड से आपकी आवाज इको हो रही है, डबल आ रही है। डबल आ रही है, मैं देखती हूँ। अच्छा, तो मैं अभी ये कहना चाहूंगी कि जो भी हमारा सोसाइटी में मिसयूज हो रहा है उसको हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। अभी बहुत व्हाट्सएप में बहुत से जोक चलते रहते हैं। कल ही मुझे किसी का मैसेज आया कि अगर लड़कियों को ये इजाजत दे दी जाए कि वो अपने पेरेंट्स को, जैसे लड़कों की ड्यूटी है कि अपने साथ रखना, उनका ध्यान रखना, अगर लड़कियों को ये इजाजत दे दी जाए तो ना तो ओल्ड होम होंगे, ना डोमेस्टिक वायलेंस होगी, कुछ भी नहीं होगा। और मुझे कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं काम कर रही हूँ महिलाओं के साथ और बुजुर्गों के साथ, तो मुझे लगा कि ये जोक नहीं है, ये कुछ ना कुछ इसमें सच्चाई भी है कि हर घर में कोई ना कोई बात है तो एक महिला महिला की दुश्मन हो जाती है, सास बहू की, बहू सास की, या दरानी जेठानी, कई मसले ये देख रहे हैं सारे। अगर ये वाला जोक जो मुझे आया है, अगर सच में हो जाए कि एक महिला को ये राइट मिल जाए कि उसके अपने माँ बाप को उसी ने देखना है, अपने माँ बाप को उसी ने रखना है, यानी कि लड़का ब्याह कर आ जाए लड़की के घर, तो आई थिंक ओल्ड होम भी नहीं होंगे। और मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि जो किसी की बेटी है वही किसी की बहू है, तो ये डिफरेंस क्यों है? ये हमें, आई थिंक नेक्स्ट आपको एक टॉपिक यही रखना चाहिए कि वही वही बेटी अपने माँ बाप का बहुत ध्यान रखती है, वही आकर सास ससुर के साथ डिफरेंट हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं मिसयूज ऑफ राइट भी है, मिसयूज ऑफ जो अपनापन प्यार सोसाइटी की हमारी संस्कृति है उसका भी है। तो इसके लिए भी हमें सबको, अपने बुद्धिजीवी महिलाओं को भी, सबको बैठ के सोचना होगा भी आगे हमें क्या करना चाहिए। सिर्फ डिस्कशन नहीं होनी चाहिए, इसकी तह तक पहुंचना होगा। क्योंकि मैं काम कर रही हूँ तो मुझे बहुत से समझ आती हैं चीजें कि महिलाओं के अंदर क्या है, क्या चल रहा है। और बॉयज, और मैं सच में बताऊं तो मेंस आर इनोसेंट इस मामले में, उनको कुछ मालूम नहीं होता कि क्या खिचड़ी बना दी जाती है। तो कई जगह, जैसे कि अभी मेरे पास एक पीछे केस आया, आई थिंक मैंने बबल जी से भी मैं डिस्कस किया। एक सेकंड के लिए आपको रोकना चाहूंगी। शोभना मैम, आई नो दैट जब मैंने आपसे रिक्वेस्ट करा था टू बी ए पार्ट ऑफ द शो, आई थिंक यू हैव एन ऑनलाइन क्लास विद द स्टूडेंट्स इन यूएसए दिस टाइम. Yes, Yeah, with I my mean, USA students now. yeah. So If I have thank your you so permission, much. may I leave?
May I leave? Please, and just last sentence from you, and then you can definitely just last sentence from you, last message from you, No, ma'am, I if you would can. just like to say, Gagandeep, you're doing wonderful, well, very beautiful work you're doing. And Kiranji, it was a pleasure once again to hear Thank you. you, see you, and Bubbles ji, also pleasure to see you, hear you. So, and I hope we all meet very soon, physically, after this Sure. Thank you. after this period. Sure. Thank you Thank so you much, so ma'am. much, India. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. हाँ जी किरण मैम, प्लीज कंटिन्यू. आई थिंक उनकी क्लास थी तो उन्होंने मुझे पहले ही बताया था कि शी हैज टू जॉइन हर क्लास विद स्टूडेंट्स के साथ. कि हम इसको यही कहेंगे कि हमें अपने राइट का मालूम होना चाहिए, हमें उसकी मर्यादा का मालूम होना चाहिए महिलाओं को कि हमें कहाँ तक, और अपनी जो भारतीय संस्कृति सभ्यता है उनको सबको हमें सहेज कर रखना चाहिए. अगर महिलाएं हैं जो समाज को, परिवार को, देश को एक दिशा देती हैं, अगर हमें दिशा निर्देश देने हैं समाज को और परिवार को, तो हमें अपनी नैतिक वैल्यू को, नैतिक जो हमारे अंदर संस्कृति है और सभ्यता है उसको सहेज के रखना होगा. हमें अपना बिहेवियर, हमारा एटीट्यूड, हमारा जो व्यवहार है वो ऐसा होना चाहिए कि सभी आपको रिस्पेक्ट दे. ये हमें महिलाओं को आज करना बहुत जरूरी है. और सबसे ज्यादा मैं हर माँ को कहूंगी, जब माँ अपनी बेटी को शिक्षा देती है तो उसको सबको सिखाने के साथ साथ उसको आर्थिक रूप से भी सशक्त करने की शिक्षा दे. क्योंकि आज जो क्लस्टर एरिया की महिलाएं हैं या झुग्गी झोंपड़ी की हैं या लोअर तबके की महिलाएं हैं, उनको आर्थिक रूप से सशक्त होना बहुत जरूरी है. और जो मध्यम वर्ग की महिलाएं हैं उनको यही है कि माएँ संस्कार दें. संस्कार जो भारतीय संस्कृति और संस्कार हैं देशों विदेशों में मशहूर है. कहीं भी आप बाहर चले जाओ, जब उनको मालूम पड़ता है कि आप भारतीय हो तो दे रियली रिस्पेक्ट यू कि भारतीय महिला है. भारतीय संस्कृति, भारतीय महिलाएं बहुत देशों विदेशों में मशहूर है, उनकी लोग वहाँ रिस्पेक्ट करते हैं. तो हमारे देश में भी रिस्पेक्ट की कमी नहीं है, बस हमें रिस्पेक्ट लेनी आनी चाहिए, अपना व्यवहार और वैसा रखना चाहिए. और जिंदगी वही है जो किसी के काम आ जाए, वही जीना उसी को कहते हैं जो दूसरों के लिए जिए. और जियो और जीने दो, ये सब बातों में मैं बहुत विश्वास रखती हूँ और ये चाहती हूँ कि सबको चांस मिले. जो टैलेंटेड लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, जो आगे बढ़ना चाहती हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़ना चाहती हैं, उनको चांस मिलना चाहिए. हम जैसे लोग उनका सहारा बने, साथ बने, उनको मोटिवेट करें, आगे बढ़ाएं. और मुझे नहीं लगता कोई भी महिला पीछे रहेगी, क्योंकि जो महिला है उसकी सिक्स सेंस होती है. वो एक मैनेजर भी है, मैनेजमेंट करना जानती है, शुरू से ही घर को भी मैनेज करती है और बाहर भी मैनेज करती है. जैसे मैं बबल जी को देखती हूँ, मैं अपने सीनियर सिटीजन्स को लेके दुबई गई थी और 150 सीनियर सिटीजन्स थे. जिस तरह से इन्होंने मैनेज किया अपने बहुत ही अच्छे हस्बैंड के साथ, सुरेंद्र कंधारी जी के साथ 150 लोगों को लंगर चखाया और दर्शन कराए गुरुद्वारा साहब के. जो इनमें पेशेंस थी, जो इनकी मैनेजमेंट थी, वो मैं देखती हूँ कि भारतीय महिला की एक जीती जागती वहाँ तस्वीर है दुबई में जो ये जो भारतीय महिलाओं को रिप्रेजेंट कर रही है दुबई में. मैं बबल जी, आपको मैं कहीं भी कम नहीं समझती कि आप भारतीय महिला को रिप्रेजेंट करती हैं दुबई में. और एक एग्जाम्पल है. वैसे ही गगन जी, आपको जो देखा मैंने कि कैसे आप घर को मैनेज, स्कूल बच्चों को, स्टूडेंट्स को मैनेज करती हैं. तो मेरा कहने का भाव है कि हम महिलाएं एक तो फिक्स सेंस रखती हैं, मैनेजमेंट का हमारे में बाय बर्थ हमारे में क्वालिटी होती है. और बहुत सी महिलाएं हैं जो बड़े डिफिकल्ट हस्बैंड को भी एडजस्ट करती हैं, इन लॉज को एडजस्ट करती हैं. तो महिलाओं में बहुत शक्ति है, महिलाओं में बहुत ताकत है. और वो सही कहा गया, पुराना टाइम की एक कहावत है कि महिला देवी भी है और समय आने पर दुर्गा भी बन जाती है. तो हर महिला में ये गुण है. और मैं तो एक बात हमेशा कहती हूँ कि महिला जो है बहुत डेयरिंग है, बहुत ब्रेव है. क्योंकि हम हमेशा देखते हैं कि एक लड़की को लजाने के लिए 250 की बारात आती है, एक शेर नहीं दूसरे घर में जाती. तो महिला में बड़ी ताकत है और महिला ही है जो शेर की सवारी भी कर लेती है. तो इसलिए महिला में वो ताकत है, इसको पहचानने की जरूरत है.
लोगों की उसके प्रति सोच बदलने की जरूरत है, और फर्क करने की जरूरत नहीं है कि अब 33% इनको दे दो या 50% दे दो। अभी हरियाणा में 33% दिया था, तो महिलाएं कैसे उन्होंने अपना दिखाया है, आगे बढ़ी हैं। और मैं आई एम श्योर कि अगर महिलाओं को 50% दे दिया जाए तो सारी समाज की बुराइयां भी खत्म हो जाएंगी, और जहां महिलाएं लीड करती हैं वहां भ्रष्टाचार भी कम होता है। आई एम श्योर, आई हैव सीन, भ्रष्टाचार कम होता है, काम आगे बढ़ते हैं, महिलाएं काम में ज्यादा ध्यान देती हैं, मेहनती ज्यादा होती हैं क्योंकि उनमें डबल काम करने की कैपेसिटी होती है। तो महिलाओं को मुझे लगता है कि आगे आगे से आगे बढ़ाते रहना चाहिए। महिलाओं के लिए सारे स्कोप खुले रखने चाहिए हर तरीके से, और हर स्टेट में महिलाओं के लिए उनको आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए बहुत सी फैक्ट्री या कोई खोलने चाहिए, जिससे आम महिलाएं जो आर्थिक रूप से सशक्त हो सके। यही मेरा कहना है। वेरी नाइसली पुट कि बहुत जरूरी है, बिकॉज अभी तक ऐसे जैसे कंधारी मैम आपने भी शेयर करा दैट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी बिलोंग टू एजुकेटेड फैमिलीज, जो हम यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं, बट मोस्ट of the women, majority of the women are not enjoying these basic rights of living as well. It can be food, clothing, or even shelter, or the basic needs of sanitization, etc. वो भी नहीं है, so that is so much important to be provided to them. और किरण मैम, आई थिंक आपके साथ कितने लाख लोग जुड़े हुए हैं जो आपने मेंशन करा था, आई थिंक लैक्स एंड लैक्स, बिकॉज आई एम फॉर्चुनेट कि मैंने आपको जो इवेंट अटेंड करे हैं, कैसे वहां पे तो बैठने के तो छोड़ो, खड़े होने की भी जगह नहीं होती, कितने हजार लोग एक ऑडिटोरियम में आप इनवाइट करते हैं। और कंधारी मैम, आपने जो करा है फॉर सीनियर सिटीजन, दे मस्ट हैव फेल्ट सो ऑनर्ड, स्पेशली व्हेन दे केम फ्रॉम इंडिया एंड यू गेव देम ऑल द रिस्पेक्ट एंड द ऑनर। दिस इज व्हाट आई बिलीव अ पर्सन नीड्स, अ पर्सन डिजायर्स। विद मी, जब मैं पहली बार लेके गई थी और उन्होंने फंक्शन दिखाया तो बबल जी ने देखा और उन्होंने कहा ये तो मेरे दिल को छू गया, और अगले साल तक मैं इसको शुरू कर दूंगी। और मैंने बहुत से लोग देखे जो उस समय टाइमली इमोशनल होते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद भूल जाते हैं, पर बबल जी अपना प्रॉमिस हमेशा पूरा किया। और पूरे साल के बाद मैं इनका इनॉग्रेट करने गई थी फंक्शन दुबई में, और इन्होंने करके दिखाया वहां पे। दुबई में इट्स डिफिकल्ट, इंडिया में बहुत से बुजुर्ग हैं जो आपके साथ मिलते हैं, वहां तो डिफरेंट लाइफ है, तो इट वाज डिफिकल्ट फॉर हर, पर शी हैज मैनेज्ड एवरीथिंग और बहुत अच्छे से किया। और बहुत अच्छी तरह से बात थी कि जब मैंने इनका फंक्शन इनॉग्रेट करने की, तो मैंने सोचा एक साल में बबल जी ने क्या इतनी तैयारी की, बट माय गॉड द वे शी मैनेज द फंक्शन, शी हरसेल्फ पार्टिसिपेटेड इन दैट फंक्शन, और इट वाज डन सो ब्यूटीफुली, इट वाज सो ब्यूटीफुल। मतलब मेरे पास वर्ड नहीं है जो उन्होंने उसको तैयारी करवाई थी। और आई एम स्टिल वेटिंग कि आप दूसरी बार मुझे कब बुला रही हैं, तो मुझे वहां जाना है। और क्योंकि ये इनमें हॉस्पिटैलिटी जो बहुत अच्छी है, इनमें और इनके हस्बैंड में बहुत अच्छी है। और मैं चाहती हूँ कि जो भी इंडियन जाए वहाँ गुरुद्वारा साहब में जरूर होकर आए, वहाँ लंगर प्रसाद भी ले और इनकी हॉस्पिटैलिटी भी अटेंड करे। बहुत अच्छा लगता है और प्राउड फील होता है कि वाह, हमारे इंडियन यहाँ पे गुरुद्वारा साहब को देख रहे हैं, गुरुद्वारा साहब उनको मैनेज कर रहे हैं, सारा कुछ बहुत प्राउड फील होता है। और जिस तरह से ये सेवा भाव रखती हैं, बहुत अच्छा लगता है। और ये भी एक आज की वुमेन की एक पहचान है कि वुमेन कहाँ से कहाँ पहुंच गई, कहाँ इंडिया से चली, मोस्ट इम्पोर्टेंट, हाँ कहाँ पहुंची। ये एक एग्जाम्पल है, एक इंस्पिरेशन है फॉर मेनी वुमेन, लाइक यू आर ऑल्सो इंस्पिरेशन। मैंने जब आपको देखा था, आप एक टीचर की हैसियत से आई थी एक पार्टिसिपेशन करने के लिए, पार्टिसिपेट बच्चों के साथ करने के लिए, तो उस समय से आज की गगनदीप में बहुत फर्क आ गया। उस समय की गगनदीप भी कॉन्फिडेंट थी, पर आज की जो गगनदीप है उसको देख के तो मुझे आनंद ही आ जाता है कि गगनदीप वाह, जो मैं आपको देखना चाहती थी आज वो हो, और इससे भी आगे बढ़ने वाली हो, क्योंकि आप में जो कैपेसिटी है काम करने की, जो आपकी इंटेलिजेंस है, जो आपको लोगों से कनेक्ट करने की अच्छी हैबिट है, इट्स अ ब्यूटीफुल, इट्स अ बियॉन्ड माय इमेजिनेशन। और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और मैं चाहती हूँ कि सारे देश की और इंटरनेशनल लेवल पे जितनी भी अच्छी अच्छी वुमेन है जो अच्छी सोच रखती हैं, उनको आप जोड़ेंगी और अपने भारत का नाम रोशन करेंगी। और बबल जी आपका हाथ पकड़ के दुबई में लेके जाएंगे, आपको बहुत अच्छा काम होगा, बहुत अच्छा काम होगा।
Thank you. Nice. So thank you so much. Thank you so much for all such kind words. Now we come to the end of the show. Finally, Kandhari ma'am and Kiran ma'am, last words or last message from your side for the audience and for Weaving Dreams. And if you feel that you would like to add something to the conversation that we had today, Kandhari ma'am. Yeah. I think we talked a lot about earlier about this the Cruelty Act 498 एक जो IPC पे था, the girls were misused, and I wanted to add in there the reason and what initially because ये dowry system और ये सब था तो उन्होंने कहा कि the girls were being really treated badly, तो उन्हें हम ये law बना दिया 498 एक का, इसे cruelty law. Domestic violence के against. And lots of other things were included in that. उससे क्या हुआ कि आप जो भी अगर एक लेडी फॉर वट एवर रीजन, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, उसे अगर अपने हस्बैंड से प्रॉब्लम है, वो जाके कुछ भी कह दे, FIR लगा दे, एंड विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन उनको सीधा अंदर कर देते थे, चाहे वो बाहर रहे, उनको अंदर आएंगे यहाँ पे तो सीधा जेल में कर देते थे. उससे क्या हुआ that many of the boys started committing suicide, which was so bad because now वो जेल में चले गए, ब्लैकलिस्ट हो गए, जॉब चली गई और स्टिग्मा सोसाइटी का लग गया, तो उससे वो बेचारों की जिंदगी खत्म, हालांकि उनका कोई कसूर नहीं है. सो दैट बिकेम सो बैड. उसके बाद फिर ये लॉ को थोड़ा सा उन्होंने अमेंड किया, जहाँ पे अगर आप FIR डालेंगे, they will have to investigate before they put the person in, which I thought was at least an improvement because इस वजह से काफी लोगों को दुख पहुंचा है, काफी families को दुख पहुंचा है, because it was totally lopsided law that had come out. एटलीस्ट शुक्र थोड़ा सा कि, लेकिन इस पर फिर भी जुडिशरी को काफी कुछ करना पड़ेगा जो इम्प्रूव करें, जिससे बैलेंस हो, लड़का और लड़की दोनों के लिए जस्टिस हो, और वन नॉट के एक तरफ या लड़के डरते रहें या फिर लड़कियां डरती रहें. इट्स नॉट राइट. एंड दिस आई फील वेरी स्ट्रांगली बिकॉज जिन जिन के ऊपर ये बीती है उनसे कभी बात करो तो यू नो योर हार्ट कम्स टू योर माउथ थिंकिंग कि इतना इतना जुल्म भी हो सकता है. So that was one thing I felt very strongly about. Regarding suggestions and messages to the women, I feel सबसे पहले the mothers should train not just the girls, they should train the boys how to respect women. अगर आप घर से उनको सिखाएंगे, अपनी माँ बहनें और जो बाहर की लड़कियां उनको रिस्पेक्ट करें, तभी उन्हें तमीज आएगी. जहाँ हम कहते हैं ना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मोदी जी कहते हैं, मैं उसको ऐड करके कहूंगी बेटा पढ़ाओ तो बेटी बचाओ. That is the way it should be because जब तक बेटे को ये अकल नहीं आएगी जो उसकी ग्रूमिंग उसको घर से मिलनी है, that is so important. और दूसरी बात द लेडीज उनमें एजुकेशन का देखना चाहिए और उन्हें अपनी अवेयरनेस ऑफ द राइट्स दैट दे हैव, तब उन्हें कॉन्फिडेंस आएगा. जब वो पढ़ेंगे लिखेंगे तो उन्हें कॉन्फिडेंस आएगा. और फिर भी उन्हें ग्राउंडेड होना चाहिए, हवा में नहीं होना चाहिए कि आई एम सो एंड सो एंड आई एम एजुकेटेड. दैट हैज टू बी देयर. एंड ऑल्सो दे आर देन स्ट्रॉन्गर बिकॉज नॉट ओनली दे आर लुकिंग आफ्टर अ करियर. अगर वो करियर में जाती है, करियर वुमेन होती है, दे स्टिल हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हाउस. आई एम नॉट सेइंग कि उनको सिर्फ यू नो वो द टिपिकल ओल्ड टाइप, नो, द मेन हैव टू हेल्प, लेकिन स्टिल आई फील women have to be grounded to see the house because घर की जो चीज होती है वो औरत से ही बनती है. जो मर्जी आप कह लें, जितने मर्जी आप एडवांस हो जाए, औरत का काम है कि वो बच्चों को ग्राउंडिंग, बच्चों को सिखाए, बच्चों को वो जो उनको यू नो गिव देम द राइट एजुकेशन एट द सेम टाइम यू वर्क इन द करियर, व्हिच इज अ डबल टास्क फॉर द वुमेन एंड शुड बी अप्रिशिएटेड बाय द मेन. कि ना ही वो करियर वुमेन भी है और साथ में घर का भी देखती हैं, और ये एक आदमी की भी, उनके हस्बैंड की भी जरूरत है, नेसेसरी है कि ही शुड पार्टिसिपेट एंड बी लाइक हेल्प हर इन एवरी फील्ड. घर में चाहे वो कुकिंग का हो, चाहे वो जो भी हो, मिल के गाड़ी चलती है, दो पहियों पे, एक पहिए पे नहीं चलती है. So this was one thing, and I feel the women have the right to live their dreams. So you have the right to fly. Go ahead and do it. And जैसे आपने कहा किरण जी, मैं वही बात रिपीट करूंगी जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, that it is impossible to think about the welfare about the world unless the condition of women is improved, because it is impossible for a bird to fly with one wing. So that is so important. This is the final message that I wanted to give.
Awesome. So the girls should be educated. They should be aware about their rights. At the same time, I think even I would like to add one thing. Not only their rights, they should be aware about their responsibilities also, because as you are rightly mentioning that it's only the female who can actually bind the complete family. She is stronger than the men who can bind the complete family. So she should be aware of her rights and her responsibilities as well. Very nicely put. Kiran ma'am, last sentence from your side, and then we end the show. Yeah. You want to ask me about what? The last sentence, last message, one sentence message for बस the girls. यही कहूँगी कि महिलाओं को, बेटियों को अच्छे संस्कार और भारतीय संस्कृति के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, जो हमारी देश विदेशों में मशहूर है। और राइटली बाबा जी सेड कि बेटियों के साथ साथ बेटों को भी संस्कार देने चाहिए कि उनको वुमेन की कैसे रिस्पेक्ट करनी है, ये बहुत ज़रूरी है। और जो भी है महिला को महिला की दुश्मन नहीं होना चाहिए, उसका साथी होना चाहिए, उसको हाथ पकड़ के आगे ले जाने वाला होना चाहिए। मोस्टली जब, क्योंकि मैं बुजुर्गों का भी काम करती हूँ, बेटियों का भी करती हूँ, बहुत से ऐसे केसेस हैं, अगर मैं डिस्कस करूँ तो बहुत लंबी बात है, कि महिलाएं ही महिलाओं की दुश्मन बन जाती है। जैसे डॉटर लॉ 498 का मिसयूज करती हैं। वही आजकल देखा गया कि जो बुजुर्ग मदर इन लॉ है, उनको उनके बेटे मिसयूज कर जाते हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं होती 90 ईयर में, 80 ईयर में वो क्या कर रही हैं। उनसे ब्लाइंडली कहीं ना कहीं साइन कराए जाते हैं, कहीं ना कहीं उनसे गलत काम कराए जाते हैं। ये मेरे साथ प्रैक्टिकल बातें मैं देख रही हूँ लोगों में, कि अभी अभी एक इंसिडेंट मेरे सामने आया था कि एक माँ जिसके बेटे को कैंसर था, ही वॉज डाइंग, और उसको उसके दूसरे बेटे ने मिलने नहीं दिया, उसको मिसयूज किया, उससे सब कुछ लिखवा लिया। तो ये मिसयूज होते हैं महिलाओं के, चाहे वो लड़की यंग हो या बुजुर्ग हो। अभी अभी एक और इंसिडेंट आया दिल्ली का कि 90 ईयर की लेडी के साथ रेप भी हो गया। मतलब जो ओल्ड एज है उसमें भी आपके बहुत मिसयूज होते हैं, या तो आपसे लिखवा लिया जाता है या कुछ साइन ऐसे करवा लिए जाते हैं, और वो बड़ी शॉकिंग है। तो हर महिला को अपने राइट और ड्यूटीज का मालूम होना चाहिए, अपनी भारतीय संस्कृति का मालूम होना चाहिए, अपने संस्कारों का मालूम होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। तो ही समाज आगे बढ़ेगा। क्योंकि राइटली सेड बबल जी कि महिला से ही समाज चलता है, घर चलता है। जो मर्जी कुछ कह लो, जितने मर्जी हम एडवांस हो जाए, महिला के बिना कुछ नहीं। जो बिल्डिंग होती है, महिला के बिना एक मकान होता है, और महिला बीच में हो तो वो घर बनता है। तो इसलिए Perfect. Very nice. Thank you so much to all of you, Shobna ma'am, and of course, she is in a class now. Thank you so much, Kandhari ma'am and Kiran Chopra ma'am, to be here on the show. I'm really sure that the women, the audience, would be learning so much from what all you have shared today. Such meaningful thoughts. इतने अच्छे अच्छे हमें कमेंट्स आ रहे हैं, meaningful thoughts, wisdom. इतना 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 बढ़िया आप सबने सबको बताया, and I'm really sure that we all should work on that. Thank you so much for being on the show. Sat Shri Akal, Namaskar. Thank you so much. thank you. So finally, we come to the end of the show, and what I learned from this show was that the condition of the women earlier was, yes, it was a patriarchal society wherein the males were dominating the female. But at the same time, now, although we are progressing, but we have to keep certain very important things in mind. The girls have to understand their rights, one thing. But at the same time, they should be aware about their responsibilities also. Then only we can say that the status of a woman is actually on the progressive path. Yes, now the society is transforming. We can see big transformation in the society. The scenario of women is slowly changing in the recent years. We are seeing a slow and steady rise of women in different fields, and these fields can be academics, it can be hospitality, it can be medical, it can be engineering. Why? Because now it's not just restricted to cooking and taking care of the households as it was seen earlier. Now the women have started coming out of their comfort zones, and they are creating their own image. They are creating their own, they are getting recognition on their own in the outside world as well. So we can also say that this is women empowerment, but before that, the respect for the women has to be there. Society has changed its stand now, and we are actually looking at a different, looking at the women in a different manner. Why? Because we are progressing. The women are progressing.
Now the men are also understanding, they become more understanding towards women. They are understanding the importance of women in their lives. But at the same time, I personally feel, and this is what the panelists have also discussed, that now if the men have started understanding the women now have more of responsibility. The responsibility of binding the complete family, responsibility of being more humble now. Because last point that we were talking about was law against the women that was made, the domestic violence law. Certain women did start misusing it. We have to see it that they do not misuse the law, because उसमें क्या होएगा, जो genuine women हैं वो बेचारी अपने rights को नहीं मान पाएंगे. वही हुआ, अब वो law में बहुत changes आ गई. So that means genuinely women are actually facing the domestic violence. Now they are not able to go and fight for their rights, for their sustenance, for their equality. So I think the onus is more on the women now. Yes, on the women, how they come outside, how they protect each other. Protection of each other, it can be in terms of mother-in-law or it can be in terms of a daughter-in-law. These things have to be kept in mind. Yes, another most important thing that Kiranji also shared with us, that the women nowadays, whenever they go to the Western countries, they are given more importance. They are given more of respect. Why are they given more of respect? Because they know that any woman from India, she is worth something. She should be, because they know that the Indian women are brought up in such an environment wherein it's a very normally, it's a very clean, very decent kind of environment. Therefore, the women outside India, if they go from India, they are given respect. And it's on us that we have to maintain that level. We have to maintain that respect that the outside world gives to us. We have to be humble. We have to be nice to each other. So this is all what I gained from today's session. I'm really sure that the audience must have also gained so many things, and we would like to incorporate those things in our lives. Be nice, be humble. This is what I would like to give the message, especially to the young girls of today. We have to be nice, especially, the girls who are staying in the urban areas. I have seen them cribbing for so many things, for certain things, that luxuries of life. But at the same time, they need to understand that go and look in the urban areas. In the urban areas, the girls are still not even getting the basic education along with the boys. Why don't we understand that as well? So we do not have to crib, we do not have to compare. Rather, it's our responsibility, being a woman, to take part completely in so many varied areas. It can be politics, it can be military, it can be economic, it can be bureaucrat, like we had Shovana Narayan ma'am, this is what she also said. It can be technology, it can be medical, it can be sports, so many things. Then only I believe that a woman would be able to lead a dignified position, in the family, in the society. So this is what I had to say for today. I'm really sure that you enjoyed the program today. And in case you like the program, go ahead and subscribe to the channel, because we keep on organizing such talk shows. And once you subscribe the channel, you will get an alert whenever we are coming with a new topic. And in case you wish to be a part of the talk show as a panelist, do mail your profile and do mail your the topic of interest, so that then we can decide how and when to invite you in our studio. Thank you so much for coming. I'll sign off for now. Thank you so much. Thanks to the dignitaries, the panelists over here, and thanks to the lovely audience for being here. Thank you. Bye. Sat Shri Akal.